क्या तुमको लगता है कि लिवरपूल ने न्यूनेस के लिए थोड़ा ओवर स्पेंड कर दिया, या फिर हालैंड इतना ज्यादा सस्ता कैसे आ गया? मतलब where is the logic, what is happening? Don't worry, I've got you covered because I have got two really nice fun special guests on this episode with me. एक तरफ तुमको दिखेंगे निधि from Menace and the Monk, who's going to talk about Darwin Nunez and everything related to this overspending thing, and दूसरी तरफ we have Man City को support करते हुए प्रणय फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड, जो कि बात करेंगे हालैंड के साइनिंग की एंड व्हाट ही थिंक्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम Haaland going into the season. This is going to be a really interesting conversation, so stay tuned till the end because it's going to be fun. Before getting into the video, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything that is happening in world football. So the thing is that there are so many leagues that you follow, and sometimes you don't get to know that which match you can watch on that particular day. You can simply open the app and check out the different fixtures that are there on any particular day. Download the app, check out the description box below, you'll get the link there, click the link and you can download the app. It's that easy. The first thing is what if. Okay, so Pranay, I want to ask you this thing, that what if you had the chance right now of buying Kane, or maybe you have Haaland. Just imagine that there is Kane and there is Haaland. Who would you go with? Would it be Kane or Haaland? I think it's a pretty tricky question, I would say. See, if you're looking, मतलब इसके multiple answers हो सकते हैं. इसका कोई एक concrete answer नहीं है. So let's say if I want to win a Champions League this season, ठीक है. I think I would say Kane, क्योंकि Kane fits the perfect bill in the system of Pep Guardiola. Like he's a striker which eventually we wanted to go with. Like he was the first choice. ठीक है. So if you ask me, like अगर एक सीजन की बात है तो किसको लोगे? तुम एक एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग स्ट्राइकर को लोगे जो हर सीजन नेट करता है गोल, हैज बीन अ क्रूशियल प्लेयर फॉर द टीम. तो आई वुड से केन. But again, like Kane is I think already 29, 29 thing he's 29, 30 I guess, 29 I think so. So in terms of a longer term prospect, then I would probably go with Haaland because of course he's one of, I would say, a Just pick generation. one. Just pick one. Both are available. And if you could pick one out of these two, thinking anything, yes, you like mentioned कि आपके लिए अगर UCL important है, so you are going for Kane. मतलब who is it that you think fits the profile perfectly if both of them are available and you can buy any? For Pep, I think Kane would be better. I mean, he was Pep Guardiola's first choice, so I am no one to Hmm. deny that. I would pick Kane for that. And again, इसमें थोड़ा सा Hmm. controversy हो सकता है कि I don't back Haaland more in Man City, but वो reason नहीं है इसका. अगर like if not Kane, then I would have said any other striker. If you would have named in the world Hmm. right now, I would have picked Haaland on that, because of course, like, if we all know that what he brings on the table. He's a deadly striker, finisher, and everything or whatnot. But if you Hmm. would ask me, I think I would go with Kane. Okay, good enough. Good enough. I think you were honest and I am buying that answer. So, Nidhi, what if to you as well? So, see, what if you had Jude Bellingham and now you have Darwin Nunez as well, since we signed one? And who would you sign out of these two? अरे बाप रे. Uh, I would go for look. I would go for Bellingham because I didn't think कि सादियो माने छोड़ के जाने वाला था. तो मैं वो थिंकिंग से आ रहा था. तो उस हिसाब से बेलिंगम, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये मैंने पिछले सीजन भी बोला था किसी हमारे मिडफील्ड में ना थोड़े रिफ्रेश की जरूरत है. आई स्टिल फील दैट हमको एक मिडफील्डर साइन करना चाहिए. आई ट्रस्ट क्लॉप 100%, बट आई स्टिल फील कि वैसा करना चाहिए. आई थिंक द अटैक लुक्स प्रीटी गुड नाउ. डार्विन न्यूनेस के साथ तो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे टेक्निकली. हालांकि डार्विन न्यूनेस प्रीमियर लीग में कैसा करेगा देखना पड़ेगा. But I would have gone for Bellingham, but ठीक है, मतलब it's not like I'm unhappy with Darwin Nunez either. So, matlab Mane leaving, Origi leaving, Minamino leaving, and you are going to rely on the players that we have in the forward line, and you'll go for the midfielder. That's No. what you're saying? I'm saying that I would have gone for um, you know um,
I would have gone for Bellingham before, given the context that Sadio wasn't leaving. But Abhi, I think Nunes makes sense. It's a tough question to answer. But So you're Bellingham going just to feels go with like, whom? Yeah. yeah, Bellingham just feels like, he his I've seen more of Bellingham play because Bundesliga we still watch a little bit. Portuguese Hmm. league we don't. So that way I'm Hmm. saying Bellingham, but okay, Nunes is also pretty good. All right, that's a little diplomatic answer here with what we got from Nidhi. Because yes, I understand that's tricky to answer, but let me just thoda rephrase it for you, thoda sa here. Chouameni or Jude Bellingham, अगर दोनों available होते, who would you have gone for? Arre baap, arre baap. Jude Bellingham. Mm, that's fair enough. That I understand, and that's not It just diplomatic at all. Yeah, I mean, in terms in young players, he's the closest to Stevie, I would say. Hmm. So Hmm. a bit of romanticism coming into it, perhaps. But yeah, Yeah, good enough, good enough. So let's move on to the next question, Pranay. See, I heard that there is this offer or there is this clause in this Haaland वाला offer पूरा का पूरा जो है that 2 साल के बाद 2024 में there is a release clause जिसमें कि कुछ 120 million पे you know वो छूट सकता है. So considering 5 साल का deal है एंड यस 51 मिलियन का अपफ्रंट साइनिंग है उसके बाद वो 85.5 का प्रॉपर 85.5 मिलियन पाउंड का पैकेज बना है आई अंडरस्टैंड दैट and it's at a bargain that you have got Haaland. But are you confident with that? एक एक जो clause उसमें add हुआ है that 120 million वाला and then he can go because considering that अगर हम फिर 2 साल का ही बात करते हैं that you guys have Haaland, I think that will be expensive because considering KDB के बाद he is going to earn The around most. 375 thousand pounds per week. So do you think what do you think about that clause? So actually, like ये थोड़ा सा मैं पहले भी confused था इस चीज़ के लिए. I initially thought that we have Holland for 3 years, but I think a lot of people then messaged me कि no, it's for 5 years. Then I actually got to मतलब मैं कल ही I read it. Many places I said it wrong, but ठीक है. But yeah, so I read मैंने details फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि क्या क्या like not the entire contract of course would read that, but जो main pointers थे तो उसमें one is that 5 years का deal. And I think it's not two, it's I think the 2025 के बाद, if I'm not wrong, I think 2025 के बाद then there is a release clause which I think वही मेरा miscommunication हो गया होगा कि 3 साल plus then a release clause will be activated. And see, I mean, again, like जो मैंने like I just don't feel like कि if he see again, it's a good signing. I don't think so Haaland would have moved anywhere in the world apart from City. Given his career right now and what he has done, I don't think so he would have moved. And plus, the history he has, like his dad played for us, and all of that stuff. Okay, but initially I just feel कि ठीक है जो deal है. I think for next 2 years, जहाँ जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो मेरे को ये लगता है कि 2 साल के बाद सिंस गार्डियोला का भी अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है एक्सटेंशन का, you know. So Hmm. I just feel कि most of our players जितने भी मैन सिटी के प्लेयर्स हैं are also kind of seeing that in mind कि अब देखो जब तक तुम्हारी टीम जीत रही है तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है. Hmm. Jack Grealish sat on a bench, 100 million signing. If he would have been in any other club, he would have been slayed every day कि भाई 100 मिलियन का तुमने ले लिया. Hmm. जस्ट इमेजिन किसी भी और क्लब में होता है, लिवरपूल में होता, यूनाइटेड में होता, किसी भी क्लब में होता, अगर Hmm. 80 मिलियन 100 मिलियन का प्लेयर अगर को जा रहे हो तो उसको बैंटर कर रहे होते. बट ही इज इन सिटी एंड ही वॉन द लीग एंड देयर इज अ होल पीआर आफ्टर he won, which is okay. So I think players also know somehow ki And he's on also what. slaying for Gucci. Yeah, I mean see, that is his personal choice, whatever he wants to promote, not No, I wanting to love promote. that. I'm not like seriously ranting on it because I loved it. That was Yeah, really I cool. mean मतलब बहुत सही it's लग रहा था मेरे को वो fashionable. सारा. I wish he would have done more fashionable stuff on the pitch for us as well.
apart from He did Atletico enough वाला against Atletico Madrid. He हाँ, did बस enough. वो बट अगर वही करना था तो बर्नार्डो सिल्वा को बेंच पे कर देते, वो भी यही काम कर देता यार, तो बट ही वाज प्लेइंग ऑन द पिच ना, तो ऑल इट मैटर Hmm. ऑल इट मैटर टू मी इज व्हाट यू डू इनसाइड दैट पिच फॉर 90 मिनट्स, तो ठीक है, Hmm. उस वे में भी एक चीज है, एंड एंड आई जस्ट समहाउ फील मोस्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर जो भी रिन्यू नहीं कर रहे, या जिन्होंने 2024 2025 तक का ले रखा है, दे आर जस्ट मॉनिटरिंग गार्डियोला सिचुएशन, क्योंकि दे आल्सो लाइक गार्डियोला के बाद कौन है, दैट इज अ सेपरेट डिबेट दैट वी विल गेट इनटू, बट I think Hmm. mostly it is because of that most of our players are going for short term, and they're trying to एक बार गार्डियोला का अगर हमें कंफर्मेशन आता है कि फॉर एग्जांपल गार्डियोला इज एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट टिल आई थिंक 25 26, जब भी Hmm. वो एक्सटेंड करता है, देन आई कैन आल्सो से कि a lot of players will start to extend, जैसे स्टर्लिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 1 साल में होने वाला है, आई थिंक he'll move or not move that, so I think it is somewhere around that is the factor that I feel. I don't know why do I feel that जब तक क्लॉप है तब तक पेप भी रहने वाला है यार प्रीमियर लीग में. I don't think that he's going anywhere. क्योंकि क्लॉप ने एक्सटेंड किया है कॉन्ट्रैक्ट, so I think that we can see that coming from Pep as well. But I feel if you guys win the UCL, we can see Pep leave. I feel that you never know if that happens or Which I not. don't want. Sorry. ये थोड़ा अच्छा प्रणय, मैंने क्लॉप और पेप का रिलेशनशिप को क्या बोलेगा, बैटमैन एंड जोकर या रश एंड निकी लॉडा, क्या बोलेगा? I think it's विच more of Oh, rush. It's a विच rush इज scene, man. Like it's a rush scene. yeah. But हाँ, थोड़ा जोकर और बैटमैन वाला भी सीन है, because if there है was no Klopp, then there is no Pep, and if there is no Pep, there is no Klopp. तो है ना? वो भी Absolutely. वो भी these है, are but the I two think these are the great. two loose हाँ. analogies that come to my mind. But the thing about Rush is that they both keep pushing each other, like they Yeah. both keep Hmm. pushing each other. One is a different kind of a manager, big team, big player, big money spends. Where Hmm. second, on the other side, you have someone who has a hands down, experience managing players, and, building up and scaling up things. सारी चीजें DIY करना. So I think it's for me, I think it's more of a rush scene between both. And that's the Yeah. perfect analogy, I feel, when we think of that in these two managers, how they have been always, grinding horns against each other and thinking what is going to happen with them. And, Nidhi, moving forward, I want to ask you, do you think that we are overpaying for Darwin Nunes? See, Nitika, here's a thing. मतलब इसका आंसर थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा तुमको. Please How do. are you I want to how know. are you how are you overpaying or underpaying for anything, right? So for example, Mm, people who go and buy for example NFTs, according to a lot of people, it is stupid, right? Economics का simple फंडा क्या होता है? What decides price? The buyer and the seller. In football context, if Benfica were really desperate to sell, we would have got him at a lower price, right? mm, If we were really desperate to sign him, we would have been sold at a higher price. That happened with us with Andy Carroll, right? Van Dijk Andy was bought. Carroll signing करा है. शक्ल वकल Andy तो वैसी he है. was overpriced, yes, absolutely. But they knew that we had money from Torres ka funds. mm, Was Andrew Robertson an 8 million signing? Why should he not be in 18 million, 28 million, right? Van Dijk ke price ko ab nobody refers to that. If City had got Kevin De Bruyne for 100 million, do you think people would be questioning it? Absolutely not. But people are questioning Jack Grealish. Why? And why did Jack Grealish cost obviously. 100 million? Because Aston Villa didn't need to sell, and City really wanted him because they couldn't get Harry Kane. Mm, So overpay would depend on how he performs. If he doesn't perform, then yes, absolutely we overpaid. If he performs, then nothing is overpaying. But mm, फुटबॉल में यार अभी देखो वो लॉजिक का सेंस नहीं रह गया. ये मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं ना कि 64. अच्छा, कितने में आपको लगता है कि हमने ओवरपे किया? नहीं किया. 50 मिलियन. व्हाई नॉट 48 मिलियन? व्हाई 50? तो वो
कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब ये इकोनॉमिक्स बेसिक होता है कि सेलर जिसको बेचना है उसको कितनी गरज है और जिसको खरीदना है उसको कितनी गरज है. सिंपल. दैट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एनीथिंग, नॉट जस्ट फुटबॉलर्स. No, I N95 absolutely मास्क agree. Yeah. N95 मास्क पैंडेमिक के टाइम पे 2000 का बिक रहा था कि नहीं बिक रहा था? व्हाई वाज इट वर्थ 2000 रुपीस? उस टाइम पे तो बिल्कुल था, लोगों को लग रहा था. अभी 10 रुपए का मिल रहा है. तो सही में मतलब आई थिंक निधि इफ एनीबडी कैन कंपेयर द फुटबॉल साइनिंग्स टू अ कोविड एंड मास्क सिचुएशन इट्स यू सो दैट defines the perfect buyer seller situation here and I agree to that philosophy which you have just mentioned and same question to you Pranay that there has been this social media narrative that I have like come across many times in the past week that हमने हालैंड को ले लिया है 51 का वो भी एक ऐसा एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है एट दैट एज लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा पे कर रहे हो एंड देन क्लॉप टॉक्स अबाउट हाउ द टीम इज नॉट वो देख सोच समझ के पैसा लगाता है डू यू बिलीव इन दैट कि हमने ओवर पे किया है व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस You don't want to hear it. You just सॉरी you don't want to hear it. नो नो आई If वांट I टू say आई my वांट टू opinion, I'm in आई big हैव trouble. अरे दैट्स व्हाई यू आर हियर ना कम ऑन अरे बिंदास बोलने लग भाई. Honestly, Ritika and अलग Nidhi, ओपिनियन नहीं सुनना होगा तो फिर आ ही क्यों रहे हो यूट्यूब पे? honestly, Nidhi and Nitika, आज से just मे बी 3-4 हफ्ते पहले कि क्या आप लोगों ने ऑनेस्टली डार्विन नूनेज का नाम सुना था? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली. सुना था क्या? अरे नहीं, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, मतलब अभी सुना था मैंने कि नहीं अपने सुना वीडियो में था? भी यही बोला था कि भाई नहीं सुना था. और क्या बोलते हैं, नहीं सुना था और कोई नहीं जानता था. बट हमने लुइस डियाज का भी नाम नहीं सुना था. हमने तो क्या बोलते हैं, एंडी रॉबर्टसन का भी नाम नहीं एंडी सुना था. रॉबर्टसन का नाम नहीं सुना था मैटिक मैटिक का भी नाम नहीं सुना था. बट वो नहीं, दैट ट्रस्ट क्लॉप हैज in terms अर्न्ड of नो. money I'm saying, like in terms, see, this is a more money terms वाली चीज ना कि but you didn't pay 100 or 80 million for Andy Robertson or वी Luis डिडंट पे but Diaz. we 100 are not मिलियन फॉर paying हाँ, 100 100 मिलियन million एज वेल. that's again हम तो 100 it's मिलियन अब भी नहीं पे कर रहे अरे इट्स 80 plus 64 20 यार, वो तो मैं नहीं है. ठीक है. हाँ. नहीं है 64 एग्जैक्टली अपफ्रंट है. we are paying 64 64 मिलियन अपफ्रंट. million 64 million the cash is we are paying and जो बाकी का चीज है वो तब होगा if he is achieving something and that's what we want I would love to give him the rest 85 million pounds that is the deal 65 is the upfront and उसके बाद जो भी उसका खर्चा है अगर वो परफॉर्म करता है only then that is getting and उसमें चैंपियंस लीग जीतना is included and if that happens हमसे खुश कौन होगा दे दो 85 million जो देना at least we are winning the league because of him I so mean, if you of think of course. the yeah if you think of the whole package it's like and I'm not criticizing anybody मैं एक चीज पहले बोलना चाहती हूँ भाई मैं एक चीज बिलीव करती हूँ और मैंने इस चीज में हमेशा बोला है कि अगर किसी कंट्री क्या बोलूं किसी क्लब के ओनर के पास पैसा है वो लगाएंगे वो वहां पे सेव करने के लिए नहीं आए अगर उनके पास पैसा है तो उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो उसको पूरा बिलीव करती हूँ हमारे पास भी अगर पैसा होगा हम एक अच्छा ऑफर के लिए अच्छी चीज के लिए जाएंगे विल नेवर गो फॉर समथिंग कि जो हमको चाहिए भी नहीं है जस्ट बिकॉज यार आई कांट स्पेंड सो मच बिकॉज ऐसा है दूसरे लोग को नहीं मिल रहा है इतना ये सब नहीं है ठीक तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई एम जस्ट गोइंग ऑन दिस नैरेटिव कि हाउ हालैंड इज 51 मिलियन का एंड सच एन established player and that's such a good bargain that Man City got trust me very Yeah, yeah. very Even good I but when I thought the prices and the inflation that we had, अगर यार डेम्बेले, कोटिन्हो ये सब 100 million plus जा रहे हैं, in the market, and Haaland for 60 million is just damn cheap. मतलब मेरे को खुद expect नहीं हुआ था यार कि like how can we pay 100 million for Grealish and get a striker like Haaland for 60 million? Like that is that's because of something. the clause again वो डॉर्टमंड के Again, साथ it's जो a पहले clause. साइन किया था या Of course. वो Like there, रिलीज see क्लॉज again. था बिकॉज डॉटमंड गॉट स्केयर्ड कि मैन यूनाइटेड लेके जाएगा हालैंड को तो उन्होंने एक रिलीज क्लॉज दिया था कि 2 साल के बाद हम इतना क्लॉज रखेंगे एंड मैन सिटी मेड द मोस्ट ऑफ इट एंड दैट्स ब्रिलियंट आई फील कितने कम पे उनको मिल रहा है एंड दे हैड टू लाइक गो विद दैट क्लॉज कि 51 में मिलेगा लेकिन अगेन वो जो एड ऑन्स करके एजेंट्स को आगे पैसा वैसा पूरा देना मतलब वो प्रॉपर डील बन जाता है 85.5 मिलियन लेकिन व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज टू साइनिंग्स लिवरपूल का बात हो रहा है
100 मिलियन, एंड हालैंड का बात हो रहा है 51 मिलियन। मतलब हमारा एड ऑन सब कुछ काउंट करके हो रहा है, एंड हालैंड का एड ऑन्स नहीं काउंट कर रहे हैं वो इस चीज में, बट I think कंसिडरिंग 80 वी and आर see एक्चुअली most 64 मिलियन। social media पे तो see again it's again depends on what. Okay, it's again आप जिस चीज को follow करोगे आपको वही दिखाएगा. I'm just gonna just give you example in terms of ideology. If I'm a right winger, I'll get feeded with all the right wing posts. If I'm a left, एब्सोल्युटली। then I'll get all feeded with the left. It's just about what you try to pursue. But हम्म। as a tackle from behind, when I see feeds, it's mostly 60 and 80 million which is being talked about. Like that, I didn't even knew it's 51 or 50 plus. I just knew it was 80 या। plus 20, and for Haaland it's 60. So and Haaland ka to kyunki just because I said it a lot of wrong, like a lot of times wrong कि वो 3 साल के लिए 3 साल के लिए. It's for 5 years. But the thing is again, like I say कि अगर जस्ट अगर हम 3-4 साल पहले का ही अगर हम रिवाइंड कर लें तो आई रिमेंबर जब अगेन जब वैन डाइक लिवरपूल ने लिया था उस टाइम पे भी बहुत सारे मीम्स थे. मतलब इट वाज फ्लडेड कि अगेन ये लिवरपूल डूइंग एन एंडी कैरल एंड पेइंग स्मोकिंग एंड पेइंग 80 मिलियन फॉर वैन डाइक. सो उस टाइम पे भी काफी मीम्स थे कि भाई हम्म। इन 35 मिलियन व्हाट डू यू गेट और इन 80 मिलियन व्हाट डू यू गेट. तो वो चीजें तो होती रहेंगी. But again it's up to them to prove their worth. हम्म। Agar if he proves like Van Dijk, then no one's going to question. No, I see zero Nobody, tweets on absolutely. Van Dijk after winning the league. I've never seen even a single comment on Van Dijk because we all know he's one of, I think he's the number one center back in the world right now for me also. Like there is absolutely no denying about it. So हम्म। and same goes with Nunez. If he proves in the Premier League, he scores more than 20-25 goals and wins it for Liverpool, then no one's going to question him for even 80 million because that's how the market is. People don't even say 222 million for Neymar. If you want to put that debate, then you might say that as हम्म। well. But in 222 million, you can buy four football clubs, man, in England, four or five football clubs in England. So, but they got it, and how many titles have PSG won with that money? So if you wanna just हम्म। differentiate उस चीज को लेके, then there is a lot of comparisons you can And get, I but think it the is all about. problem is that, yeah, see, मैग्वायर को इतना हेट क्यों मिलता है? आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइस टैग बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है. हैड दैट नॉट बीन दैट एक्सपेंसिव, शायद हम इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड हेटरेड ना देखते टुवर्ड्स हिम. तो प्राइस टैग, लाइक यू जस्ट राइटली No, if he's मेंशन्ड, कि playing, एट द see, एंड इट okay, ऑलवेज. Neymar maybe see it doesn't get, nobody hates Neymar because he plays well. Okay, nobody hates him because कि वो अच्छा नहीं खेलता. He's one of the हम्म। मतलब talents है यार, मतलब in football. So हम्म। it's not a, but again, if you just compare it with what has he achieved with PSG, then is paying 222 million was worth it? No. हम्म। Same goes with Harry Maguire. With 80 million Harry Maguire, 80 million Van Dijk. When United paid, they're still trophyless. In lot like जितने पिछले 5 साल से last trophy that they won was हम्म। Europa. Or with Van Dijk signing, you went on to win the league, the double, the Champions League. So nobody questions that. So it's all about हम्म. narratives that you get from what kind of things that you follow. You still feel that हमने ज्यादा पे किया है फॉर न्यूनेस, राइट? See, बोल दे 80 बोल दे million, वो of course. वो हाँ, सुनना see, चाह रही है. 80 million is, of course, is a lot हमने of बीच में money. इंटरप्ट कर दिया था, या. हाँ, like 80 million is still a lot of money for a player. But again, like if he proves me wrong, then there's nothing वो यार. अब हालैंड अगर आ गया है, if he is not performing, लोग बोलेंगे भाई 60 million भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्यों दिए? Why did even Pep paid हम्म. 60 million for this? So the narratives तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे. And मेरे ओपिनियन Absolutely. के कि कोई चीज ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है, it hardly matters. Well, yeah, at the end, we are doing something in the transfer market, and I think that's what matters. The way it has just gone ahead. Like, पहले Pep ने sign किया, उसके बाद Klopp ने sign किया. Just like we were talking about these two before. So, Nidhi, do you think that it was a pressure buy for us, even though we know that Liverpool doesn't do that at all? आपने पहले भी ये चीज मेंशन किया है कि हम बहुत सोच समझ के साइनिंग करते हैं, लेकिन प्रणय ने बोला कि तुमने 2-3 हफ्ता पहले डार्विन नूनेज़ का नाम नहीं सुना था. तो मे बी इट इज़ अ प्रेशर बाय फॉर लिवरपूल बिकॉज़ हालैंड आ रहा है, तो वी नीड टू ब्रिंग समथिंग, एंड चुआमेनी चला गया, सो व्हाट टू डू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? It's not
it's not a pressure buy. It's more like a statement signing. When jab Thierry Henry was ripping it up in the Premier League, Sir Alex went ahead and signed Ruud van Nistelrooy, है ना? तो स्टेटमेंट साइनिंग्स होती हैं ये. ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज नॉट लाइक पड़ोसी वाला ना, उसने ऑल्टो खरीदी तो मैं बलेनो खरीद लूंगा, वैसा थोड़ी Noisy ना है. neighbors. हाँ, Noisy neighbors. हाँ, वैसा थोड़ी ना है मतलब. एंड यू नो आवर स्काउटिंग टीम टेक्स अ लुक एट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, राइट? ऐसे ही थोड़ी हमने Hmm. यार मतलब साइंटिस्ट बिठा के रखे हैं अपने स्काउटिंग सिस्टम में. तो आई थिंक इट वाज एक्सेलरेटेड बाय माने डिसाइडिंग टू लीव, बट आई Hmm. डोंट थिंक इट्स अ प्रेशर साइनिंग कि उन्होंने खरीदा तो फिर तो हमको बहुत बार करना चाहिए था, पिछले सीजन क्यों नहीं किया? Absolutely. अगर ऐसा करना होता तो हम ये वी वुड हैव डन इट पिछले साल ना, उसके पहले साल कर लेते. द Hmm. सीजन व्हेन वी वन द टाइटल वी साइंड हु सेप वैंडरबर्ग एंड हु नोबडी. आई थिंक एक मिनामिनो लिया था समर में और Hmm. एड्रियन फ्री. तो that Yeah. was after winning the Champions League. So we don't do that. Hmm. It's more of a, you can call it a statement signing, yes, but I don't think it's a reactive signing. Hmm. Okay, so Pranay, do you think that Haaland in the Premier League? Then I actually made this thing. I wrote in my community post that two new ponytails in Premier League. Because both of them look quite similar and both have ponies, and it's quite funny when you think of it. So I want to ask you, do you think you can see the system change and maybe work around Haaland? Maybe Pep does something different, because that's a situation that I'm also thinking of Klopp, that we might see a different sort of football from these two, and I'm actually quite excited to see that if that happens. But do you see that happening कि Haaland के आने से उसके around system बनेगा, या he will have to be in the system and work accordingly जो already system बना हुआ है? I think given of what I've been following Guardiola, I don't think so कि the system will change, because then if he's doing that, तो फिर मतलब एक player को लेके तो कोई अपना system थोड़ा ना change करेगा until you're Ole Gunnar Solskjaer कि Oh. but but I don't think so Pep Guardiola is like that. But हाँ, given the fact, आई मीन जो एथलेटिको वाला गेम हमने खेला था ना सेकंड लेग में, उससे मेरे को पता चला कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है. लाइक ही इज लाइक अ मैडमैन. दैट गाय कैन डू एनीथिंग, तो I चेंजेस was very यस, proud बट of Pep, by the way. I was very, very proud of या Pep that day. जिस तरीके से वो second leg हुआ, I'm like, Pep, kudos to you, man. द एटीट्यूड मैन, द एटीट्यूड इन, मतलब आई थिंक एक रिपोर्टर ने उससे पूछा भी था कि फर्स्ट लेग के बाद या फर्स्ट लेग से पहले कि सिमियोने हैज सेड कि ही मतलब ही डजंट लाइक लूजिंग, मतलब तभी दैट्स व्हाई ही प्लेज मोर डिफेंसिवली एंड ऑल. So Pep just said one thing. He said that I hate losing more than Simeone. So that I think उस टाइप की अप्रोच अगर किसी बंदे के अंदर है, Yeah. so that guy, like, just the potential of doing anything is just scared me. So Hmm. but I think there, of course, क्योंकि ऐसा out and out, जैसे आई Haaland kind of gives me a more Aguero feels. मतलब Haaland does give me a kind of Aguero feels की clinical finisher, prolific, मतलब Hmm. sharp shooter की, मतलब एकदम बॉल आ रही है तो just quick finish करता है वो कहीं से भी, like anywhere he's in the box there's a goal threat. जितने भी डॉर्टमंड के हमने गोल्स देखे, जितने भी हमने चैंपियंस लीग में मैचेस देखे हैं, he can finish it from anywhere. That he gives me, but again we all know कि how Aguero ended up in the last years in the Hmm. Guardiola system. So वो मतलब वही है कि my mind is kind of very two-sided right now कि what, like I am also very curious plus I'm surprised कि कैसा type का देखने को फुटबॉल मिलेगा. But I Hmm. think I think if Pep has signed him, if Pep has signed him, I think I genuinely think that he has plans for him. And Hmm. yeah, there is absolutely no doubt that I think he's gonna be the golden boot winner for this season, like for sure. I just know, like, if he I- stays fit, if he stays fit,
he's gonna be the Golden Boot winner in this season for sure. There's absolutely no उसका denying to that. But उसका fitness is not फिटनेस इश्यूज है the क्या? yeah, उसका फिटनेस इश्यूज है क्या? फिटनेस इशू है ना उसका. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कीप रिपीटिंग कि हालैंड इज अ वेरी वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर. जस्ट उसके स्टैट्स भी मैं देख रहा था कि ही मिसेस अ लॉट ऑफ मैचेस. 4 मैचेस के लिए उसको इंजरी कहीं पे हो रही है, कभी नी इंजरी हो रही है, कभी एंकल इंजरी लेकिन हो रही है. टेंशन क्यों ले रहे हो यार? वो कंपनसेट कर देगा अगले मैच में आके, क्या टेंशन है वो? उसका हाँ, बट stats अगेन, देख के but again, like I said कि मतलब if he stays fit, I think he's getting the golden boot for sure. हम्म, हाँ. And Baki, I think, yeah, he's gonna be good, man. He's I want to be definitely this gonna be good. confident in life. I want to be this confident. You know, मेरे सामने साला के नहीं अगर बट मान लो तुम वो लीड कर रहे हैं, there are like 10 goal difference with the previous one, still I'll be in doubt कि if it happens, because I think मेरे मेरे में वो डाउट नहीं खत्म होता till the time it actually happens. फिर I'll be like crazy. But उससे पहले तक I don't say anything कि यार कुछ ऐसा इधर उधर ना हो जाए. But kudos to the confidence. Nidhi, you were saying something. नहीं बट वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा यार? 4 साल में 5 साल में 4 प्रीमियर लीग जीते हैं वो लोग, तो कॉन्फिडेंस इज अर्न्ड ना. इट्स फॉर अ रीजन. Absolutely. And it's incredible यार. It's And मतलब whatever we प्रीमियर लीग win में or तुम जितना lose, मर्जी whatever, sorry to cut you off, whatever the yeah, games we it's have okay. lost and all, I've never seen Man City play bad football, yeah. Like that is the bottom line. Even the games that we have Hmm. lost, it's either because of luck or it's because of overthinking. I've never seen Man City play bad. लाइक नेवर. एक गेम अगर हम हारे भी हैं तो उसके नेक्स्ट गेम में सबको पता होता है कि क्या होने वाला है. नॉर्विच या कोई भी बॉटम, अगर अगर एक बड़ा गेम अगर हम हारे हैं तो, और Yeah. अगर अगला गेम अगर किसी भी बॉटम हाफ ऑफ द टेबल टीम से है तो उनको 5-6 गोल पड़ने ही पड़ने हैं फिर. दैट इज द काइंड ऑफ कम बैक दैट आई रियली अप्रिशिएट, Yeah. लाइक दैट इज द, बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम. बट टू सी, like again with other teams, I don't see that. If they're playing bad, they're playing bad. Yeah, they haven't lost it because There's a they run were of playing two good or football. three Yeah, bad games. Yeah, 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 I yeah. agree to that. Even Arsenal Even had, if you're they having, could have made it to the top four, and suddenly they had that bad run of three consecutive bad games, and I think that ruined the momentum for them. Otherwise, the things could have been totally different because Arteta did really well with Arsenal, but then suddenly that bad run of games, I think that's what we don't see विद मैन सिटी. एक गेम हारे, नेक्स्ट में तुमको पता है कि धुलाई होगी जो भी टीम आ रहा है. दैट हैपेंस अ लॉट. बट निधि, जस्ट गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जैसे प्रणय ने बोला कि दे नो अगर एक गेम गलत खेलते हैं तो अगले गेम में कमबैक होगा. डू यू ऑल्सो फील दैट दैट हैपेंस विद लिवरपूल? बिकॉज आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि व्हेन अ टीम इज कमिंग टू प्ले अगेंस्ट मैन सिटी, दे आर लाइक भाई चाहे मैक्सिमम रिजल्ट हमको निकालना है कि ड्रॉ हो जाए और कुछ नहीं, क्योंकि जीत तो नहीं पाएंगे. लेकिन व्हेन दे कम अगेंस्ट लिवरपूल, भाई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस बाय द गोलकीपर, बाय एवरीबॉडी प्लेइंग अगेंस्ट अस, मतलब दैट्स हाउ आई फील कि दूसरा टीम ऐसे आता है, आज दिखाएंगे, आज करके दिखाएंगे. मतलब इज देयर समथिंग लाइक दैट? यार आई prime थिंक Brazil दैट 2002. यार आई सॉरी. थिंक दैट्स आल्सो Prime दैट Brazil 2002. Yeah, I also think that's a little bit of psychology at play because we are fans and we are emotionally so invested. हमको ऐसा लगता है, I'm pretty sure City fans को लगता हो कि उनके against सारे गोलकीपर बुफॉन बन या जाते हैं, right? नहीं. नहीं. सी. अच्छा नहीं रख, because I've heard this from a few City fans, the same thing. But I think because of the narratives around our defense and high line and all that, uh, maybe those things happen. But बुरा तो हम भी नहीं खेलते हैं यार. मतलब नहीं. listen, we've lost 2 games this season, right? 3 if you include the Champions League final, right? तो बुरा तो हम भी नहीं खेलते हैं. Nobody can tell me that Liverpool पूरा सीजन बस लक पे जीत गए नहीं उसके. नहीं नहीं. राइट, वो Not तो आई possible. थिंक, yeah, so I think that it's a lot of these are narratives, and it's easy to fit a narrative into what you think, and internet पे तो ये चीज और भी ज्यादा easy है. तो I think that teams raise their games against us, against City, against, because that's just a lot of times there is nothing to lose, right? So that's at play. So that's the reason I think. I was having this conversation with Gokulam Kerala's ex-coach. So
he mentioned this exact same thing, that क्या होता है ना, when like Gokulam Kerala had won the I League, okay, in the previous season. So he said what happens is, जब कोई टीम हमारे अगेंस्ट खेलने आता है ना, so they have this mentality कि इनके अगेंस्ट जीतेंगे because they won the championship, right? मतलब they were the champions of I League. तो अगर जब इनको हराएंगे, so we'll set a statement कि देखो हमने ये हराया, because वो होता है ना, पूरे लीग का जो उनका जर्नी है, उसका क्या एक अचीवमेंट वाला पॉइंट रहा है, वो है कि हमने विनर्स को हराया है. So sometimes that happens, people come with that mentality, and that's why it gets a little difficult for maybe the top 2 teams or top 3 teams in the league to get results. And I actually agreed to that. Maybe that's how we start thinking, the fan base start thinking कि यार चीजें different way में हो रही हैं. And let's just move on to the last of the questions, because ये Haaland and न्यूनेस पे पूरा वीडियो था. सो निधि, डू यू थिंक, प्रणय ने तो बोल दिया है कि जीतने वाला है भाई गोल्डन बूट हालैंड, कि उसमें थोड़ा टक्कर देने के लिए सॉन वगैरह के साथ हमारा कोई होगा, मे बी साला, मे बी नूनेज, मेकिंग अ स्टेटमेंट, या फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में एक बार लीग में आने के बाद? नूनेस को यू आर आस्किंग मी अबाउट नूनेस, राइट? या देखो, उसको टाइम लगे या ना लगे, क्लॉप हमेशा यंग प्लेयर्स को ही गिव्स टाइम टू देम टू सेटल. We've seen that with Robertson. We've seen that Salah nahi, because Salah aate hi, Salah was an exception. Mane again was from the Premier League, but generally Klopp gives players time to settle in, and I think that will be given to Nunez as well. तो golden boot वगैरह तो मैं अभी से नहीं बोलना चाहता हूँ, because I think Nunez मतलब कम games खेलेगा हालैंड से, honestly. तो I think he has all the attributes where he settles in, and again this is from reading. Honestly, मैंने नूनेस को ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है, सिर्फ चैंपियंस लीग में देखा है, ठीक है, और उसमें भी मैंने मोस्टली हमारे अगेंस्ट देखा, और एक दो मैचेस जो आयक्स के अगेंस्ट था और वो सब देखा. तो आई थिंक ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स, लुक्स लाइक, बट आई थिंक ही विल बी गिवन टाइम टू सेटल इन फ्रॉम क्लॉप साइड. I mean, if he surprises Klopp and पता चला आते ही सबसे अच्छा लुइस डियाज फॉर एग्जांपल, लग ही नहीं रहा था लुइस कि डियाज, एग्जैक्टली. ट्रांसफर है, तो ऐसा लग रहा था मतलब प्रीमियर लीग का ही प्लेयर है भाई. हाँ, तो राफीना सरप्राइजेस like this, राफीना 2.0 दे रहा था वाइब्स. yeah, वही है. Yeah, so moving forward, Pranay, I just want to ask you, I forgot the question. अभी दिमाग में था कि मेरे को ये पूछना था. I just forgot the question. बड़ा अच्छा question था, I swear. Just give me a minute. क्या था? क्या पता आ जाए हाँ, I वापस. got it, I got it, I got it. I got it, I got it. So, you have been not a critic. I won't say critic because लोग एकदम से against हो जाते हैं. But you have been vocal about this thing that you're more excited about Alvarez than Haaland, because you think that Alvarez is the long-term project. Okay, not like you think that Haaland is not for the long-term thing, and that's what we talked about, the clause that is there, that he might leave after 2 or 3 years. So, do you still feel that that can happen, or do you think that with given time, maybe things change, and maybe your perspective change about it, or are you डू still यू counting on डू यू Alvarez? स्टिल, मतलब क्या अभी मैंने स्टेटमेंट ही 4 दिन पहले बोला है, तो 4 दिन में कुछ चेंज No, no, थोड़ी ना no, हो this जाएगा. happened. This actually happened when we were discussing about this with Divyansh on his 2 podcast. वीक्स I और 3, remember. आई थिंक 29th को ही तो बोला, 3 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे हम लोग चैंपियनशिप पॉलिटिशियन फाइनल. थोड़ी है हाँ. कि हम लोग हाँ, पॉलिटिशियन थोड़ी है कि 10 दिन में स्टेटमेंट चेंज हो सही जाए. बात है. आई मीन वो सी, लाइक अभी तो देख, अभी वही है. सी, आई थिंक इसका आंसर अभी कोई सी इसका आंसर वही है कि सी, इट्स एन ओपिनियन. अगेन कोई आके मेरे को बोले कि नहीं भाई तू गलत है, तेरे को कैसे पता कि मैं गलत हूँ, और मैं ये बोलूँ कि मैं सही हूँ, तो और कोई बोले हाँ तू सही absolutely, है, it's your तो opinion. Yeah. तो मैं भी खुद क्या प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ. तो आई थिंक जब तक सीजन नहीं होता, जब तक एक सीजन हम नहीं देखते, तब तक यू नेवर नो कि क्या क्या एक्चुअली में है, कि सही है कि गलत है, बट Nee, let me rephrase the question. Let me rephrase the question. Do you या think that Alvarez is gonna get like game time in the या squad, ऑफ or do you कोर्स, think he? of Yeah. course, of course. And I just hate the fact uh, where people don't recognize South American football or Copa Libertadores को not an actual competition, like it is something like कोई ऐसी league. It is not. It is just not. ठीक है.
of course he hasn't played in Europe. Of course he has to play in Europe, and he has to उसको वहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा, वहाँ पे उसको खेलना है अल्वारेस को. बट द क्वालिटी दैट ही ब्रिंग्स, मैं उसके स्टैट्स भी देख रहा था भाई. बंदा मतलब इज अ गोल मशीन. एंड ऑफ कोर्स उससे थोड़ी एक तुम्हारा प्लेयर से अटैचमेंट भी होता है ना, कि नाउ ही आइडलाइजेस अग्वेरो. लाइक उस सेम उसका थोड़ा लुक भी वैसा है, उसके सेलिब्रेशन भी वैसे है. तो इट एक तुम्हारा एक इमोशनल भी तुम्हारा एक रहता है कि भाई अगर कोई साउथ अमेरिकन अटैचमेंट हो फुटबॉलर जाता है यार, या आ रहा है, अटैचमेंट या हो जाता है तुम्हारा. ठीक है. एंड ठीक है, देर आर गुड केसेस, बैड केसेस, कि अब गैब्रियल जीसस भी साउथ अमेरिकन है, शायद वो वी कुड हैव ट्रीटेड हिम बेटर. आई पर्सनली लाइक्ड हिम अ लॉट. For whatever reason, he didn't got the playing time he deserved. He was destined to be the successor of Aguero, but somehow I don't know what went wrong, or I just don't know what went wrong with him. But now since we have Haaland and Alvarez is coming, I genuinely feel that he will be getting a lot of game time. I don't think so that he's gonna start the games right away. Absolutely not. But I think कॉम्पिटिशंस भी तो इतने सारे हैं. एफए कप है, कैरेबाओ कप है. सो इतने सारे अरे कॉम्पिटिशंस हैं. वर्ल्ड कप सो के लिए खेलने जाएंगे, वर्ल्ड कप में वो भी यूज होंगे, हाँ, यू नेवर नो कब किसका क्या इंजरी प्रोन ऑफ सब कोर्स, हो ही जाता है यार, ऑफ कोर्स. बिकॉज तो इट्स गेम्स वर्ल्ड ही कप इतने एंड सारे हैं. एवरीबॉडीज तो गोइंग टू गिव देयर एवरीथिंग. गेम्स ही इतने सारे हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब आई एम बैकिंग इवन. हाँ, जैक स्टीफन को भी यार कम से कम 4-5 गेम्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस प्रीमियर लीग में. सो मतलब ये सीजन, क्योंकि इट इज सच अ डिमांडिंग सीजन, ये वाला सीजन तो फॉर श्योर. So I just don't like, I not writing off my old woe, but I just somehow feel ki on a longer term I think you know I would still say to my statement कि भाई Alvarez को मैं longer term prospect मानता हूँ City पे than Haaland. And given the situation, like Haaland is a superstar and all of that, you never know कि किससे किससे क्या ऑफर आ जाए, and he might want to leave आगे, which I hope he don't. Like I just hope he proves me wrong. He stays with us, scores a lot of goals, becomes the actual successor of Aguero, which I don't think so. उसके अग्वेरो के बाद होने के बाद कोई भी मतलब स्ट्राइकर तो था नहीं हमारे पास. बट आई, एक होता है ना कि एक तुम्हारे पास एक नंबर 9 तुम्हारे पास है जो मतलब आउट एंड आउट फिनिश कर रहा है तुम्हारे लिए गोल्स. तो वो अगर वो बन जाता है देन एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन. लाइक देयर इज नथिंग वो. एंड इवन इफ ही डजंट, देन दोनों प्लेयर सिटी के यार. एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग, आई डोंट केयर कि कौन गोल मार रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है, सेम. जब तक हम जीत रहे हैं तब तक मैं खुश हूँ. ये सब चीजें तब आती हैं जब तुम्हारी टीम नहीं जीत रही होती है. तो मैं ग्रिलिश को बैठ के रोज गालियां सुना रहा होता. तो अब हम जीत रहे हैं तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है भाई, तू कर ले पार्टी. नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री एंड आई एक्चुअली थिंक दैट यू आर राइट अबाउट दैट कि इतना खेलने को मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो यूटिलाइज डेफिनेटली हो जाएगा. गेम टाइम की कमी तो किसी को नहीं होने वाली, तो बेंच तो हाँ. काफी खुश रहेगा इस चीज पे. ऊपर से 5 सब्स्टिट्यूशंस होंगे इस बार से, राइट? इफ आई एम नॉट Yep. रॉन्ग, आई Yep. आई Yep. आई थिंक इस बार 5 सब्स्टिट्यूशंस होंगे, सो दैट विल वर्क इन द फेवर एज वेल एंड दैट इज व्हाट वी नीड. सो गाइस, दिस इज द वीडियो एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट हालैंड एंड our own Darwin Nunes. तो हमारे लिए see, two ponytails for these two, but then I feel more than any analogy that Nidhi has given, I'm going to go with Karan Arjun. So Pep and Klopp are like Karan Arjun for me, because that's the vibe they bring, that emotion. Do you see the hugs that they give each other after the match ends? It just doesn't feel like the competition. मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं था problem, and then suddenly the game is on. And even after Man City and Liverpool का जो match हुआ था, Pep talking to Trent, then KDB and Van Dijk gelling, it feels like a very healthy competition, and that's the really really good football that we get to see out of these teams. And I'm really excited about Community Shield that's going to be on July 30, and तभी हमको Yeah. देखने को मिल जाएगा what Nunes and Haaland हम bring. लोग हाँ, हम लोग इतना पोनीटेल पोनीटेल कर रहे हैं, पता चला दोनों ने बाल कटवा लिए सीजन बाल से कटवा दिए. Just imagine Very that can possible. happen. Very much possible. Yeah, so okay, so that's thank you so much for coming, and links description में है. तुमको पूरा routine पता है, this is the protocol, तो links description में है, जाके subscribe करो. And thank you. बस और तो नहीं कुछ बोलना, हाँ हो गया. So thank you. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from all of us. Thank you. Namaste everyone. Yes, bye Namaste. bye.